Is the agenda visible? No. No, it's not. All right. So I'm just going to walk us through verbally. So we'll have some opening remarks by Mr. Ehsan Malik, who's the CEO of Pakistan Business Council, followed by a presentation by PBC on the report. And then we have our panelists from Mr. Dr. Azmat Awan Saab will join us from NARC, since they're spearheading the government's project on olives. And then, of course, we'll have Mr. Virender Kumar, who will join us from Dalda Foods. And we have Dr. Ashraf Saab, who's representing National Foods. And then we have Mr. Ali, who will be joining us from Siddiq Olive Store, since they're working on the retail side. And then, of course, we have Mr. Yusuf Ali Shah, who's an olive farmer. So with that, I'd like to pass on to Mr. Ehsan Malik to please give your opening remarks, sir. Assalamu alaikum. Good morning, everybody. Very quickly, I think I know that a lot of people on this particular webinar have been to other webinars that we've been holding on a number of subjects. But very quickly, to introduce Pakistan Business Council, we are a research-based business advocacy body. We don't actually represent any particular sector. So we speak for what is good for the country and what is good for the country primarily through business, obviously. That said, our overarching theme is Make in Pakistan, and that is for very sensible reasons. One is, of course, generating employment, but also import substitution and promoting exports. So within that, we've got three pillars. One is, of course, manufacturing. So we want to make more and we want to make it better so that we become more competitive, both for exports as well as for import substitution. The second one is, of course, promoting the production and, of course, export of services. But the last but not the least, which is the most directly relevant to today's webinar, is what we call grow more and grow better. So we are constantly looking for crops and products and produce from Pakistan, given that we are primarily an agricultural country, that we can promote the production in the first instance, but also then conversion into value addition and then potentially exports. But certainly if we can't export, then at least import substitution. So that really, that brings us to today's subject, which is olives. But just to tell you that before this, we've done a report and several webinars on the horticultural sector. We've also covered the meat sector, and very recently we covered the dairy sector. So olives is something that is emerging in Pakistan. I don't want to go into detail because that is what the next presenter will do. But having said that, I think let me just welcome you again. We have a very distinguished panel, and we are really looking forward to hearing them. But over to you, Harim, please. Assalamu alaikum, everyone. I'll be presenting to you the findings of our study titled Potential of Olives and Olive Oil in Pakistan. So I'll start off with a very brief analysis of the global market, which is actually sized, the global market size is around $10 billion US of olives and its value-added products. And it has reached 10 billion amount because of increasing awareness of health benefits, the popularity of Mediterranean cuisine, and the increased usage of olive oil in pharmaceutical and beauty products around the world. So the two major products are the virgin olive oil and the table olives. These two are the most traded items in the global market and have a market share of 75% and 20% respectively. Moving on to olive oil. So olive oil has actually grew by 30% over the last decade. And table olives have grown by 18% over the last decade.
So in response to this growth, the government of Pakistan actually started the olive promotion project, which is being implemented in KP, Balochistan, Fata, and Punjab. And the government aims to cultivate 2.5 million olive trees on 35,000 acres of land. So under this project, farmers receive olive plants free of cost, subsidized water and drip irrigation, and also technical assistance. So up till now, the project has actually resulted in a few of actually accomplishments. The average fruit yield has reached 15 kilograms per plant, and oil yield is 18 to 20% in Balochistan, which is the highest in the country, and 10% in Punjab. So moving on to discussing the demand of olive oil in Pakistan, it has actually increased by an annual rate of 12% over the last 10 years. And because of actually increasing preference for healthier diet and wider penetration of international cuisines. So despite the fact that consumption is increasing, we see that the import of olive oil is just 0.5% in the total edible oil import bill. And it is because the Pakistani cuisine, it requires deep frying and high heat cooking, for which olive oil is unsuitable because it has a lower boiling point. And if boiled or if used in cooking on high heat, it burns and it gives a very burnt taste and smell. Also, olive oil is less affordable than other cooking oils, namely, palm oil, which are mostly used in cooking in Pakistan. Therefore, there is, limited opportunity for substituting edible oil with olive oil. Moving on to table olives. Table olives, the demand for table olives in Pakistan has grown by an annual growth rate of 25%, but unfortunately, more varieties of table olives are not grown in Pakistan because oil extraction is usually subsidized by the government, and there's no subsidy available for growing table olives. This is actually why farmers who grow olives and olive trees, they prefer to extract olive oil from those olives rather than send them into processing of table olives. So, well, there are many value-added products of olives, including olive biscuits, cakes, and sweets, and olive pickle and tea. So among all these value-added products, the two most promising are olive pickle and olive tea. So olive tea actually, we have olive pickle have an opportunity in the domestic market and also among the Asian community living abroad, because generally, domestic consumption of pickles is quite high in the country and within the Asian community. Plus, there are several food processing companies operating in Pakistan who have established distribution network, brand loyalty, and marketing capacity to enter into this olive pickle business. Regarding olive tea, it has an opportunity in the international market mainly. It at present it is actually sold on Amazon at a very high rate of up to $50 per kg. But for Pakistan to start exporting tea, we need to actually work on packaging, branding, and marketing for it to be sold in the international market. At present, it's actually sold to a very few domestic retailers, mainly selling organic products or through social media platforms. So despite significant efforts by the government
the government of Pakistan, the sector is actually faces certain challenges which hinder the growth. First of all, there are absolutely no quality standards or testing facilities are actually not used by the olive oil extractors and processors. So local olive oil that is available in Pakistan, it's actually, we are unsure of the quality, that whether it qualifies to be an virgin olive oil or extra virgin olive oil. The pricing strategy is actually the local olive oil is sold at a very high price as compared to olive oil that is being imported in Pakistan. And the participation of commercial players is actually very important. It is in the sector, so that they participation in basically oil extraction and processing of table olives. Other challenges include improper harvesting tools and equipment, inadequate oil extraction infrastructure, since farmers, they are very fragmented and scattered. So oil extraction facilities are inaccessible. Plus, the packaging of local olive oil is actually in used bottles, which is, it cannot be sold in the main big retailers or international market. And the branding and marketing at present is very weak, which actually limits the penetration of olive oil or table olives. So in light of in light of the global market and the current olive sector, the scenario, the current demand for olive oil and table olives, and the challenges, we have proposed 3 set of recommendations. Firstly, it's very important to actually conduct a domestic and export market analysis, which is presently, which is not the focus of the government olive promotion project. The project mainly focuses on the supply side, increasing the cultivation. So simultaneously, we need to focus on the strengthening of the supply side as well by conducting a baseline survey and planning crop cultivation as per the demand, which is not presently done, and also work on the capacity building of local vendors to manufacture oil extraction units. We presently import oil extraction plants. Thirdly, mobilization of private sector investment is very, very critical. We need to bring in farm brands and engage farmer clusters, which can be best done by the private sector, so that they can adopt the best olive growing practices. I will close this presentation with a few takeaways. So basically, olive consumption is, as we have seen, is increasing globally, and the demand is increasing globally. And as a response, the government of Pakistan has provided us a proof of concept that olive can be cultivated in Pakistan. It's mainly cultivated on marginalized land, which cannot be used for cultivation of any other crop. But the domestic consumption is volumetrically very limited here, because the nature of Pakistani cuisine and affordability is limited. On the other hand, there is an opportunity to export, seeing the growth in the demand for olive oil and table olives. There's one point I'll like to repeat here, that the local olive oil, the local production of olive oil, it does not have enough potential to reduce the edible oil bill, because even though the consumption is increasing, it is a very, very minute part of the total edible oil import bill. It's just 0.5%. And lastly, olive cultivation and oil extraction is expected to have a positive impact on farmer economics, since it is cultivated on marginalized land and there's absolutely no opportunity cost for the farmer. It's actually additional income. And it also, olive cultivation also has a positive impact on the environment, because olive trees, they actually are they actually have the greatest capacity to
absorb the carbon dioxide content in the atmosphere. So I would like to end the presentation here. I would like to thank everyone for their attention and would like to pass it on to Saud and towards the panelists. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot, Harim. Thanks for the presentation. And we have with us Mr. Umair Paracha, who's a consultant and has worked on writing the report. And then Harim also has contributed. Harim is a program associate at the Pakistan Business Council. So moving on, we're going to move to our panelists. And we just to set the ground rules a bit, we have about 5 minutes for remarks by each panelist. So I'd request the panelists to try and abide by that time limit. And also, if there's any questions, we're going to have a question and answer session of about 15 minutes after the panelists have spoken. So feel free to write your questions in the chat box or raise your hand and we'll give you the mic during the Q&A. So with that, I'd like to invite Dr. Azmat Awan Saab to, Azmat Saab, kindly sir, if you can give your views on the project which is being implemented by the government as far as the olive cultivation is concerned and any other remarks that you'd like to make. Thank you. Welcome to all of you. I am Dr. Azmat Awan, Deputy National Project Director, Commercialization of Olive in Pakistan. So I will give a short brief about the government project which is done throughout the countries. So in Pakistan, actually the promotion of olive was started in 1986. Different type of projects, 14 projects were completed, which was run by the federal government, provincial government, or funded by the different NGOs or Italian governments. So till now, in Pakistan, we have planted 4.9 million plants, mostly in Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan, and now initially we have included Sindh in our new projects. And these 4.9 million plants was covered on 40,000 acres. So these plantations was mostly started from 2012 and 10 now. Most of the plants were planted in these 7 to 8 years. So the main aim of our project is to reduce the import bill. One thing that I want to share with you that olive oil is never be the substitute of edible oils. Actually, the aim of our project is to promote olive is to export our extra virgin olive oil to our neighbor countries and will be reduce the import bill on this shape to spend on our import other oilseed crop, because olive oil is never be the substitute of edible oils. So in this project, we are going to establish the infrastructures like nursery tunnels for youth, to involve the youth in the production of nurseries and the value addition of different olive products. And also we are going to establish the capacity buildings for different capacities of farmers, olive stakeholders, scientists, and the nurserymen. We are going to conduct the training sessions for these categories of peoples. We are going to conduct this training in Khyber Pakhtunkhwa, in Balochistan, Punjab, and now we are going to start these activities in the province of Sindh. So in these new projects, that is the project that was called the promotion of olive cultivation on commercial scale in Pakistan. Phase 2 was started from June 2021 till June 2024. The objectives of this project is to cover 75,000 acres under the olive plantation in throughout the countries, including Gilgit-Baltistan, Azad Jammu Kashmir, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, ex-Fata, Punjab, and most of the areas of Balochistan. So we are also going to register olive nurseries in public and private sectors. Till now, 12 nurseries, in which 6 are already registered, while the remaining 6 are in progress, which will be registered very soon with the Federal Certification and Registration Department. In addition of this, we have provided up to now 26 oil extraction units throughout in the countries. Most of them are in Balochistan, some in Khyber Pakhtunkhwa and Punjab, where we provide the facilities free of cost to the farmers to extract their oils. We also provide 3 value addition units
one in Khyber Pakhtunkhwa, one in Punjab, and one in Balochistan, which is called destoning, de-petting machines for value addition activities, like to prepare aloe pickles, aloe for pizza and other activities. Behind this, now we are going, the main activity, the objective of the project is going to establish Pakistan Olive Oil Council, which is very important. I think most of the people you listen, you have seen the Facebook or in the WhatsApp that Pakistan became the 19th member of the IOC. I want to just clear one thing, that still now we are not the member of IOC. We are the observer member of IOC. We have submitted the case to the government of Pakistan for the membership. It will take some time. Hopefully soon we will get the membership of IOC. But at this stage, we are not the fully member of IOC. We are just observer member of IOC. So this is the main objective. And the other thing, we are going to cultivate the cultivable wasteland, which is 8.2 million hectares throughout in the country. We are going to cover these cultivable wasteland under the olive cultivation, and hopefully within few years we will be able to export olive oil to the neighbor countries. Thank you. All right. Thank you so much, Dr. Azmat Saab. And thanks for giving us an insight into the work that the government is doing and the project that's being implemented. With that, I'd like to pass on to Mr. Virender Kumar, who's the project manager for agriculture and innovation at Dalda Foods. Virender Saab has been helpful in while we were preparing the report. He gave us a lot of insights, and there's some on-the-ground testing that Dalda Foods has done. So I'd like to pass along to Virender Saab. Virender Saab, it seems like you hurt yourself on the arm. I hope you're doing all right, and we'd love to hear from you. Thank you. I got a little accident on Saturday night, so Sorry I got to discontinue doing, but I'm okay now. Good to know. Regarding my own experience on olive, I traveled across KPK and parts of Chakwal, and I also visited parts of Balochistan, including Loralai, Zog, Kalad, a few parts of Ziyarat, Dera Bukti. So my experience was totally different. Although I agree with Dr. Azmat, he is well known for the olives across Pakistan. I think previously he was the part of same organization, PODB. I also worked for 7 years in PODB. But to my part, the plantation which came across the KPK, it was the brilliant, the best plantation ever I have seen across KPK, in Lower Dir area, in Upper Dir area, in Parachanar, different parts of KPK. The plantation was excellent. Even the people were also taking care of plantation on their own. Even it was very difficult to irrigate them because they are on steep slopes. They are not on a plain ground. So, but even then, people since know their opportunity, they know the value of olives, they have managed the crop. And also, if Dr. Azmat may remember, one of PODB's own olive cultivation farm, which is known as Olive Valley in Sawabi. I also visited that one. Unfortunately, it was left abandoned. It was more than 100 acres farm and it was left abandoned. So I don't understand, even if though there was an opportunity for everyone else, why that 100-acre farm was left abandoned. An excellent plant was established where private farmer used to bring their fruit, they crush it, and they get olive oil from it. But I don't understand why that farm was being abandoned. Dr. Azmat, may you please light something on it? Can I answer? Yes, sir. Yes, actually, the problem was that during 18th Amendment, the government was wound up our PUDP department, so they transferred the employees to different departments. But you know that during this project, we again own the Sangbati farm, and we now are going to rehabilitate the Sangbati farm. And soon you will be see the Sangbati in next year within the same position as you visited last 10 years before.
hopefully next year we will get sufficient production from Sangbatti. We spend a lot of money. We have rehabilitated the orchards. We have rehabilitated their infrastructure like nursery production, everything. So hopefully next year you will see again the Sangbatti in the same position as 10 years before. I will be very happy to see, Doctor, because it was the farm established by Dr. Azmat himself. Am I right, Dr. Saab? Yes, sir. Still, I am working in PUDP. Still, I am the employees of PUD, and I am working from last 22 years on early promotion in Pakistan. So, Sangbatti is also, So we are going. if I can just jump in, sorry, because I have to moderate the session. Can I also just request, let's keep our questions and answers to the end. Dr. Azmat साहब आपसे request होगी कि अगर आप note down कर लें सारे सवाल, ताकि end में हम आके वो सब चीजों को visit कर लें, revisit कर लें. And Virender साहब, if you can also enlighten us as from your experience, Dalda Foods experience, what kind of olive product you've seen in the country, what is the potential, और Dalda की जो अपनी research है, आपकी research ने आपको क्या बताया? Thank you. देखिए, मैंने samples collect किए थे right from Chakwal, KPK, different parts of KPK. I also collected samples of fruits and oils. तो उसमें opportunity तो है. We can have virgin olive, we can have extra virgin, we can have pomace, we can have 3 brands that are generally required by the customers. We can have all those variants. We can have also what we say flavored olive oil, which is now being introduced around the world, and our Pakistanis around the world like that. Besides that, we can also have table olive, which is in demand nowadays. And I have also collected those sample from Chakwal, from KPK, and also from Balochistan. Fortunately, the quality was not as bad as that of Spain and Italy. The difference was the samples from Loralai were observed the best olive oil across Pakistan. This is my personal observation. At Dalda's own lab, we analyzed those all variants. We analyze all samples from 3 locations. Let's say Chakwal, being part of Punjab, KPK, and samples from Lower Dir, Upper Dir, Attak, a few samples of Noshera, and a few samples of Parachanar. So all locations, all samples proved to be very promising. They fall in the category of excellent food grade olive oil. Again, the opportunity lies with the farmers as well, because it is still unclear whether the price we have been offered from private companies from Spain and Italy, will that be competitive as compared to our local farmers? And farmers need to understand, if they quote that our olive oil is around 3,000 rupees per liter, will that compete in the international market when we import it from other sources? So this question is very much important. And besides this, I will also request Dr. Azmat to constitute a group of farmers, industry, and government organization, which can jointly work on that. So this is my personal observation. Regarding plantation, I would say, being a soil scientist, being an agriculturist, there is no way that this plant cannot be grown or fruit cannot be observed, fruit cannot be achieved, because one of my friend has his own olive orchard in Abu Dhabi. When it can be grown in Abu Dhabi, the desert where temperature lies 45 degrees. So why cannot be done in Pakistan and every part of Pakistan? It can be done. Because in Sindh, we see an opportunity at the Gorakh Hill station. I have brought some 5 plants from Loralai, and I planted those plants at our Gharo research station. They are being grown very well. In 5 months period, they have grown so much. I think their height has become 7 feet now. So this is the evidence that it can be grown. That's so wonderful. It also depends on further research on it. Thank you so much. Thanks so much for your comments, Virender Saab. They're very, very insightful. I would like to, let's move on, and let's also get views from other panelists on the topic. I'd like to move on to invite
Dr. Fayyaz Ashraf Saab, who's the Director Quality Research and Development at National Foods. We're very fortunate to have representatives of companies such as National Foods and Dalda Foods, because these companies are doing the leading work as far as olives is concerned. So we're really fortunate to be hearing from them today. So Dr. Fayyaz Saab, over to you. We'd love to hear from you on your regarding your experience, particularly in terms of the market, sourcing olive raw material. What has your experience been? Do you think this is workable? And making those processed products in Pakistan, because that's National Foods forte. Do you think that's it's a viable space to be working in? Over to you. Thank you, sir. First of all, I would like to congratulate PBC that they have done a marvelous job by writing this report. It is really, I have gone through each and every page, each and every line. So the information is very good. Are you people hearing me? Yes, we can hear you. Yes, sir. Okay. So the report is very good. Of olives in Pakistan is also very good, because as per report, we can plant as much as Spain has potential, and Spain is the #1 exporter of olives products. I have not really worked on olive oil, but other value added products. What we need to do, as Dr. Azmat said, that we should not replace our other oils with olive oil or value-added products. We should export these products, earn some money, and buy the cheaper alternatives. Like we can buy soybean oil, we can buy palm oil is not frankly used that much as it is mentioned in the report, 95%. Maybe there is some information from somewhere, because palm oil usually we import, there is no doubt, but the other oils like canola oil, soybean oil, sunflower oils, we import seeds and we extract in Pakistan. Maybe that is the reason that data is not available in this report. We buy a lot of canola seed and other seeds from overseas. But anyhow, if we can sell our oil at higher price and we can export it, and we can buy cheaper oils alternatively. As far as value-added products are concerned, we need help from government also. As industry, I am running around everywhere. I see Dr. Azmat. I met each and everyone who is involved in the olive project. Like I am going to Chikwal on regular basis. I am visiting Dr. Azmat, Dr. Tariq on regular basis. But unfortunately, our companies, like not only National Food, like other companies, we are not being involved in this project. We usually go visit them and get some information. What I would like to propose to like Dr. Azmat and Dr. Tariq, that whenever they have opportunity to go abroad, visit other plants, visit processing plants, they should invite us to, that we should go and get some knowledge. And when we are developing our factory, so at least we know we have some knowledge. We have done our IRD, we have done our research and development, our products are ready, but unfortunately, the way we have grown our olives in Pakistan, at this moment, it is mixed, like one person has grown table olives, as well as they grown the olives for oil extraction, because these are different. And there is a variety, which is dual variety, which can be used for oil extraction as well as for the table olives. So there is a lot of potential. It is already shown in the report also. So we should work together and we should do some research on olive tea also.
because this tea we are selling, but there should be some scientific evidence that it is really good. We cannot sell leaves and say, because it is good for us, because religiously we believe olive is good for us. So that is a religious factor, but we need a scientific factor also, that what is in the olive teas, in olive tea, which is good for the health, any antioxidants, any other thing, whatever it is. So we need to involve universities, we need to involve PARC, NARC, PCSIR to these kind of research. There could be MSc level research, there could be PhD level research, but we should do that if we want to do that. And we need to look forward, not for 5 years. We need to look forward another 25 years or 50 years. Because once these trees are grown very well, because we are growing in our cultivation, and then when they will start giving fruit, so we will be having enough fruit. So then we should compete with the overseas prices. If our prices are like we are selling olive oil now, we cannot export it. Or export it over olive oil in Pakistan, we can buy at the rate of 1,300 per liter by paying all those duties. So how we can compete overseas with those companies which are selling that low price, and we in Pakistan are selling our production cost, you can say maybe it is 2,500. So we need to work on that. So industry and this project management team, universities, and our research organizations, we should work together. We should have, maybe PVC can take initiative to join all these together. So we should have a team where we should find solutions for next 20 years. At this moment, we are really at early stage. If I need 2 ton table olives for my research, it is very difficult to get that. It is not that easy. So, as per report, we have only produced 10 ton of oil last year. So it is not, we are not like in a mode of exporting it at this moment. So we really need to work together and join hand for the betterment of our country and to make it exportable commodity. So thank you. So thank you so much, Dr. Fayyaz. I think we hear you loud and clear that this is still olives is still in a market development phase, and sourcing the product and all those market linkages. I think they need to be established, and of course, once we have a product, only then can we kind of even dream about exporting it. So we have a long way to go, but it's always good to keep the conversation going. With that, I'd like to pass along to Mr. Muhammad Ali Khan, who, from what I understand, was working, not anymore, at the Siddiqui olive store. Ali Saab, please correct me if I said that right. But we'd love to hear from you now that we're talking about, having to talk. We've just talked about the fact that we're in the market development phase. We'd love to know on the end market side, what does the retail market for olives look like? What kind of products and are sellable in the market, if you will? So kindly enlighten us on that. Thank you. Over to you, Ali Saab. Thank you, sir. Can you hear me clearly, everyone? Just want to make sure. Yes. Okay. Yes. So firstly, the esteemed panelists that I'm sitting with, most of their experience is more than my age. So whatever I will say will be like, it will not be as much as what they said. But looking at it from a ground perspective, from like a very real life perspective, one of the biggest challenges we faced, because as one of the companies I worked with was Siddiqui's, was the price compared to what people can buy imported products. And this was something that was big because even on our Facebook posts,
And whenever we put up stalls, people were like, why would we buy your oil, which is like, as Dr. Fayyaz said, 2,500 or 3,000 rupees or more, when we can just get something half the price and it's imported. So people still have that mentality that whatever is imported is definitely going to be better than whatever is what we have at home. And this has been a big challenge when trying to actually sell our products at a profitable price. I think it comes down, for marketing and sales, it comes down to 3 points. Firstly, what we really need is education and awareness for the people who are going to buy the product and for the people who are producing the product. That goes to farmers, that goes to manufacturers, that goes to packaging, right? Everything. Second thing, as I already said it, is the packaging and the marketing of the product, which is very important. Because how you show it, that's what people are going to perceive it, that's what they're going to buy. You always know that it's always the story that sells. So we need a message behind it. We want to make the people feel like, especially Pakistanis, that this is our product. This is something that they should at least give it a chance. And from my experience as a company, when we've gone to like olive conferences, when we have sold our product, when we've put up stalls, our most sales were to people who actually knew what they were buying. People who were either olive enthusiasts or researchers or even people from abroad. We had people from France, people from Spain. They tasted our product and they were like, oh, this is actually good. And they don't mind paying that price, but getting the normal people, getting somebody who's just buying olive oil because they believe, oh, it's a health benefit, olive oil is good for health, is difficult. So we need to tackle that as a country, as one people. Also, I would also like to stress on the fact, as Dr. Azmat said, that the youth need to be involved in this. They need to be involved in a way that they want to do it. It should be something that they are not, I wouldn't say push, because I think our youth has been pushed enough, but they should have incentive in this, because they are going to be the future of the country. And not just the youth, because as I've seen from farms and from people who actually own land and are working on them, most of these are veterans, people who have been growing wheat and canola for decades, for family generations. I come from an agricultural family, and I tell you, if I tell my father right now, you know what, let's plant olives, 5 years later, we're going to have the fruit, he's going to be like, what? So we need to break that barrier between what people see as success. Like, okay, you can get wheat in 1 year, but olives is something that's that lifetime. Like, and there's an Urdu saying that is कि जो ज़ैतून है, this should be something that should, as Dr. Fayyaz said, that this is 25 the people. They need to help the people understand that, okay, you're going to plan this, you're going to get nothing for 4 years, but that does not mean that it's unsuccessful. They planted the olives for 4 years, the olives it was a full tree, but then they were like, you know what? No, and they planted. So we need to tackle this. Saud, you're You muted. can't hear. Saud, you're muted. I'm sorry, I was muted. I was just saying that we lost Ali Saab for a bit, but I'm glad he's back. Ali Saab, are you there? All right, I think we're just having a bad connection, Ali Saab. But I'm sorry. Would you like to just close your comments? All right. Let me just take the video off. Can you hear me now? Yeah, we can hear you. So, hello? Yeah, we can hear you. Okay. Is this better? Yeah. Please go ahead. I can't hear anyone. All right. So,
Okay, maybe we can come back to you. Maybe you cannot hear me. I don't know what's going on. I'll just leave and join. Okay, okay. It's so I think we got the gist of your comments. So thank you so much for that. And of course, we understand that you said that the buyer does care about the flavor, and not just the health benefits is not that all that matters. So there's a lot of marketing work and awareness work that needs to be done. So with that, I'd like to हमारे साथ यूसुफ अली शाह साहब हैं जो कि ग्रोअर हैं, मगर यूसुफ साहब आपके पास आने से पहले हमारे साथ अबरार साहब हैं जो सीईओ हैं नेशनल फूड्स के। वो एक सवाल पूछना चाह रहे हैं क्योंकि फिर उन्होंने जाना है, तो मैं उनको क्विकली अबरार साहब आई वुड लेट आप अगर अपना सवाल पूछना चाहें अबरार साहब, यू कैन आस्क इट नाउ। जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. I'm sorry for this rude interruption, but I was very keenly listening to this webinar, and obviously कुछ obvious questions हैं while all the learned people actually have shared their experiences, but actually as a processor, as a manufacturer, marketer, brand promoter, I think जो एक obvious सवाल आया है क्योंकि we are very keenly looking at the establishment of a consistent output of olives in Pakistan so that we can market these, branded, marketed, exported, even sell it locally, both table olives and oil production की field हमारी नहीं है, but I think the important aspect is from an agricultural perspective is that do we actually have a study which does a comparison in terms of cost per kg or cost per liter in terms of जो हम output देंगे olives का, इसकी yield जो है हमें how does it translate to in terms of cost per kg. I think it is very important to look at that so that we can determine the marketability both from an export perspective and from a domestic perspective. Now, PBC की study जो है मैंने पढ़ी है, उसके अंदर there I could only find one reference point of 2,500 rupees per liter, and उसके आगे भी जो है वो basically comments जो है वो ये लिखे हुए कि I think even at this particular aspect जो है वो there is some form of struggle to actually market and sell using this kind of a cost. Now I know that Pakistan के अंदर जो है बड़ी मेहनत की गई है, and Pakistan government is very excited about this project, but I think ये basic सवाल जो है कि अगर ये viability इस cost के ऊपर नहीं बन रही तो maybe one of the bigger assumption actually is कि आगे जाके जब scale बढ़ेगा तो शायद ये cost per kg जाए नीचे जाएगा और जाना भी चाहिए उसको. But I think उससे पहले जो है shouldn't we actually carry out a study of leading brands which are selling globally and उनका जो है वो selling price per liter और kg जो है वो क्या है both in terms of oil and table olives and in terms of के उनकी cost per kg जो है वो क्या है उनके respective मुल्कों में, say for instance Spanish olives जो तो I think this would really pave the way for setting a target or a tone to the agricultural sector to improve the yields of the olive or bring in technology which can make us competitive. Because without that, I think this project, I don't know whether we are focused and we actually have the right knowledge to expand and grow this thing if we are not cost competitive. So sorry for a very long question, but I thought this was rather important for us to know. जी बिल्कुल, absolutely, Abrar, a very pertinent question. I think it's the fundamental question, right? Dr. Azmat साहब, आप इस पे कुछ जवाब देना चाहेंगे कि price competitiveness perspective से olives क्या viable भी है, commercially viable भी है? अच्छा सर, इस तरह के चूंकि पाकिस्तान में इस स्टेज पर जो प्रोडक्शन है ना वो इतनी नहीं है कि हम इसको कह सके कि हाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है. इस स्टेज पर अभी चूंकि पाकिस्तान में प्रोडक्शन कम है तो इस लिहाज से इसकी जो कास्ट है ना वो ज़्यादा है. एक तो इसका बड़ा मसला ये है कि जो एक्सट्रैक्शन यूनिट लगे हैं ना जी वो फार्मर से बहुत दूर है. जिस तरह आज़ाद कश्मीर का फार्मर पल लाता है इस्लामाबाद तो उस पर वो अपनी कैलकुलेशन करके ट्रांसपोर्ट का वो चार्ज डाल के वो उधर 1-2 दिन ठहरता है, वहाँ पर होटल का खर्चा डाल के फिर इसके जो बाटलिंग का है, पैकिंग के, वो सारे एक्सपेंडिचर उसके ऊपर डाल के तो वो अपनी एक कास्ट निकालता है. आपने देखा होगा कि किस जगह पर फार्मर दे रहे 1 लीटर 3500 में,
दूसरी जगह पर फार्मर दे रहे हैं 2000 में। तो ये जो मेन रीजन है वो ये है कि जिस तरह मूसाखेल का फार्मर 2 साल पहले वो पल लाता था चकवाल में, तो वो कहता है कि मेरा लाखों रुपए खर्च हो जाते सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पे, फिर वो इधर आके एक उनको वो स्टे भी करना पड़ता है उनको, फिर उनके लिए और जो मतलब इसके जो सारे एक्सपेंडिचर उसके ऊपर डाल के तो ये कास्ट ऊपर आ रही है। इंशाल्लाह फ्यूचर में ये है कि हमने अभी तकरीबन 26-27 मशीनें लगा दी और यही कोशिश की जो पोटेंशियल एरिया है वहाँ पर हमने ये यूनिट इंस्टॉल कर दी है। एक तो इससे जो फार्मर की जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो मिनिमम हो जाएगा। जिस तरह मूसाखेल के करीब लोरलाई है, लोरलाई में हमने 3 मशीनें इंस्टॉल कर दी, एक 600 kg वाली और एक 100 kg और एक 80 kg वाली। इसके अलावा जोब में हमने एक मशीन इंस्टॉल कर दी है। इसके अलावा किला से फुल्ला में 2 मशीनें इंस्टॉल हो गई है। क्वेटा में हमने एक बहुत बड़ी मशीन 600 kg वाली इंस्टॉल कर दी है। इस तरह खुशदार में 2 मशीनें हमने लगा दी। तो ये जो पहले फार्मर क्या करते थे कि पंजगूर खुशदार से लेकर वो पल लाते थे इधर क्वेटा में, उनका एक दिन लग जाता था सिर्फ उसमें ट्रांसपोर्टेशन में, तो वो सारी एक्सपेंडिचर उसके ऊपर डाल के तो वो अपनी कैलकुलेशन निकालते तो हर एक फार्मर अपने हिसाब से उसकी कास्ट निकालता, कोई 2000 तो कोई 2500 कोई 3000। एक रीजन तो ये है। दूसरी रीजन इसकी ये है कि जो इस अभी तक जो प्रोडक्शन है वो इतनी नहीं है कि हम ये कह सके जिस तरह ये प्रोडक्शन इंक्रीज होगी ईयर बाई ईयर तो इसकी कास्ट खुद बहुत रिड्यूस होती जाएगी। उसकी वजह है कि फर्ज कर अभी पाकिस्तान में लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है ऑयल की, स्पेशली लोग लोकल ऑयल, वो कहते हैं कि हमें लोकल ऑयल दिया करें, तो इस लिहाज से वो लोगों ने कास्ट अपने हिसाब से रखी कि यार इनको तो ज़रूरत है, वो 3000 में भी दे देता है, 3500 में भी। असल अभी मैं आपको बताऊँ पेशावर में एक है ज़ेकोर के नाम से, उनका अपना आर्चर्ड है, वो उसने क्या कि उसने बॉटल इंपोर्ट किए चाइना से और बहुत ही खूबसूरत उसकी पैकिंग है, वो 3500 में सेल करवा रहे हैं, लोग ले रहे हैं क्योंकि उसको मार्केट का पता है कि किस तरह वो अट्रैक्शन उसमें लानी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी एक हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो गया है ऑलिव कल्चर के नाम से, जो इटालियन फंडेड प्रोजेक्ट है, उसी प्रोजेक्ट के अंदर हमने ये चीज़ें एड्रेस करवानी है। सबसे पहले जो उन्होंने बात की कि हम एक ग्रुप बनाएंगे साइंटिस्ट का, फार्मर का, स्टेक होल्डर का और बिजनेसमैन का, जो जितने लोग हैं नसीमैन का, इसके एक हम एक वर्किंग ग्रुप बना रहे हैं जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व होंगे और इसी वर्किंग ग्रुप वाले फिर या मंथली या फिर क्वार्टरली मीटिंग करेंगे और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसी प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ें हमने करनी है कि जो हमारी प्रोडक्शन है, क्वालिटी ऑयल किस तरह हमने इसकी जो क्वालिटी इसको किस तरह और भी हमने वो बेटर बनाने, अच्छी क्वालिटी बनानी है, मतलब अगर वर्जन ऑयल है तो हमने अच्छा वर्जन किस तरह चले जाने उस पर। इसी पर भी इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम अभी ये ऑयल एनालिसिस क्वालिटी की एक लेबोरेटरी NARC में इस्टेब्लिश करवा रहे हैं इटालियन प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से आज तक हमने कोई सच कोई कैलकुलेशन नहीं की कि पर पर लीटर कास्ट या पर केजी कास्ट क्या आ रही है, लेकिन फ्यूचर में ये है हमारा कि जो इटालियन प्रोजेक्ट इसी के अंदर ये सारी कैलकुलेशन करके हम एक वेबसाइट एस्टेब्लिश करवा रहे हैं जिसमें हर एक चीज़ अवेलेबल होगी। इसमें जो पर लीटर की जो कास्ट है वो भी होगा इंशाल्लाह, जो हम पिकल बना रहे हैं उस पर पर केजी का क्या कास्ट आएगा, बाकी जो रिलेटेड प्रोडक्ट है उस पर क्या एक्सपेंडिचर होगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारी कोशिश है कि नेक्स्ट 1-2 साल में ये चीज़ें करके तो हम इंशाल्लाह सबको प्रोवाइड कर देंगे। अभी तक हमने कोई ये सच इस तरह नहीं की। दूसरी वजह यह है कि एक मिनट, दूसरी मेन वजह यह है कि जो मशीनें लगी है कुछ प्रोविंशियल सेक्टर में है, कुछ फेडरल सेक्टर में है, तो अभी तक हमारे साथ डेटा भी से नहीं आ रहा था। अभी हमने क्या किया कि हमने सारे जहाँ भी मशीनें लगी सब हमने लेटर लिख दिया कि कमिंग सीजन में आपने हमें एग्जैक्ट डेटा देना है, नंबर ऑफ फार्मर्स का, उसके केजी फूड्स का और ऑयल एक्सट्रैक्शन का। तो इंशाल्लाह अगले साल से ये जो मेन चीज़ है ये डेटा हमारे साथ आना शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह ये डेटा फिर अवेलेबल होगा नेक्स्ट ईयर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन साहब। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और फिर मार्केट में लाना, उस सबको फैक्टर इन करना, ऊपर जो भी मार्जिन वगैरह लगाना एट रिटेल लेवल, आई थिंक द प्राइस हैज टू अल्टीमेटली कम आउट टू बी रीजनेबल, बिकॉज एट द मोमेंट जो हमने रिपोर्ट में भी लिखा है वो भी यही है कि जो इस वक्त फार्मर्स और रिटेल लेवल पे प्राइसेस मांग रहे हैं वो मतलब एक तरह से रियलिटी से काफी दूर हैं, और उस लेवल्स पे जो है ना इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है उसके साथ तो कम्पीट ही नहीं कर सकते। सो कुछ हमारे फार्मर्स को भी इस चीज़ को शायद समझना पड़े कि अगर उन्होंने चीज़ को ज़्यादा मार्केट करना है तो उसके लिए उनको थोड़ी सी अपनी प्राइसेस को दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, और इसी पॉइंट पे मैं यूसुफ अली शाह साहब के पास जाना चाहूँगा। यूसुफ साहब, आपको हमने बहुत
माजरत से आपको इंतजार करवाया, तो बट आपके पास हम आना चाह रहे हैं। आप काइंडली हमें जो अपनी ऑलिव की आप कल्टीवेशन करते हैं उसके बारे में कुछ बताएं, और आपका जो एक्सपीरियंस रहा है उसको ग्रो करने का और उसको मार्केट में ले जाने का, इन चीज़ों के ऊपर हमें थोड़ा सा आप अपने पर्सपेक्टिव बताइएगा प्लीज। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज ठीक आ रही है? जी 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 प्लीज, आवाज आ रही है आपकी। जी, उसमें सर ये है कि इसकी कल्टीवेशन के तो मसाइल तकरीबन खत्म हो चुके हैं, ना होने के बराबर हैं। ठीक है, अभी भी जो बात हो रही थी रेट की, ऑयल की, या जो वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट हैं उनके हवाले से मैं थोड़ी सी बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ। डॉक्टर आजमत साहब के जो अल्फाज थे उनमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ। असल में सर जो आउट ऑफ कंट्री जो ओलिव पे काम कर रहे हैं वो 100 साल 500 साल उनको हो चुके हैं, पौधे उनके बड़े हैं, फ्रूट ज्यादा उनका आ रहा है। हमें जो प्रॉब्लम है सर, सबसे पुराना अभी मैं हूँ, ठीक है, इस पे काम कर रहा हूँ। तो मेरे पास भी अगर कोई 12-14 साल 15 साल के जो पौधे हैं, ठीक है, तो फ्रूट उनका कम आता है। ठीक है, उनके मुकाबले में नहीं जो आउट ऑफ कंट्री है, उनके फ्रूट जो है ना ज्यादा हो जाने की वजह से उनकी कास्ट कम हो जाती है ऑयल की। और हमारी कास्ट अभी इसीलिए बढ़ी हुई है कि हमारी आउटपुट जो है ना फ्रूट की इतनी नहीं है। तो जब 2-4 साल 5 साल आने वाले 5 सालों में हमारा फ्रूट बढ़ जाएगा, जब वो 50 किलो 100 किलो देना शुरू हो जाएगा, तो हमारी भी कास्ट कम हो जाएगी, ऑयल की प्राइस भी नीचे आ जाएगी। दूसरा जो मार्केट की ऑयल की आप बात करें, इसमें देखा गया है जो लैबों में टेस्ट करवाए गए हैं, हमारी ओलिव फाउंडेशन ने जो टेस्ट करवाए हैं या बरानी इंस्टीट्यूट ने जो टेस्ट करवाए हैं, मसलन उसमें मिलावट ज्यादा है, ओरिजिनल ऑयल नहीं है। असल ऑयल खाने वाले वो ऑयल है जो फ्रूट तोड़े 2-4 घंटे में उसमें से ऑयल निकलवा लें, असल ऑयल ये है। ठीक है, इसकी अफादियत ज्यादा होती है। इसके मुकाबले के जो ऑयल है वो तकरीबन जो है ना इस वक्त 4000 प्लस में वो सेल हो रहे हैं। यूसी डेविस यूनिवर्सिटी वाले वो 9000 प्लस में, नाइजेरिया जैसा मुल्क 6000 प्लस में वो सेल कर रहे हैं। दूसरी एक और भी वजह हमारे लिए है, हमारे पास है, जो बनी हुई है, वो जो प्रॉब्लम हमें आ रही है कि अभी तक हम जो है ना इसको सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जन ओलिव ऑयल जो है ना निकाल रहे हैं। हमारे पास दूसरा कोई कंसेप्ट नहीं कि हम उसमें से पॉमेस निकालें या लाइट ऑयल निकालें। ठीक है, उस वजह से भी हमारी कास्ट बढ़ जाती है। अगर मैं एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ कि एक वैरायटी में अगर 23% ओलिव ऑयल है, ठीक है, या 20% आप लगा लें, तो निकालते उसमें से कितना है, 8% 10% आप निकाल लेते हैं। लेकिन दोबारा अगर हम उसको करें कोई और प्रोसीजर अडॉप्ट करके, कोई और तरीका करके हम उसमें से बाकी जो बचा कुछ ऑयल है वो भी निकाल लें, तो हमारी कास्ट कम हो जाएगी। ठीक है, हम उसमें कोई केमिकल ऐड करके पॉमेस की सूरत में निकाल लें तो वो भी बिकेगा, तो उससे भी हमारी कास्ट कम होगी। तो हमें अभी मार्केट में थोड़े से जो है ना मसाइल आ रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगे। एक चीज और अभी जिस पे जो है ना बात करने वाली है कि हमें पैकिंग मटेरियल सर बहुत प्रॉब्लम है। उसमें सबसे बड़ा ग्लास बॉटल का है। अभी तक पाकिस्तान में यूज बॉटल यूज हो रही है, ठीक है ना, कोई नई बॉटल नहीं है। कोई भी बंदा, अभी हमने मंगवाई है 10,000 बॉटल जो है ना चाइना से मंगवाई है। ठीक है, तो इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सी फैक्ट्री वालों से बात भी की, तो वो भी इस पे आना नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि जी अभी आपको बॉटल थोड़ी चाहिए। तो वो एक दिन की जो उनकी प्रोग्रेस है मिसाल के तौर पर बॉटल बनाने की, हमारे लिए हो सकता है वो 3 माह 6 माह के लिए सफिशिएंट हो। तो इस तरफ बॉटल बनाने की तरफ भी कोई नहीं आ रहा। तो मतलब मार्केट में हमें मटेरियल शॉर्ट है, नहीं मिल रहा। बॉटल की सूरत में, उसके ढकने जो बनते हैं उसकी सूरत में, मसलन हमें आज भी मेरा बेटा लाहौर में 2-3 दिन से बैठा हुआ है, उसके जो बॉटल के ढकने हैं वो बनाने के लिए एक फैक्ट्री वालों से बात हो रही। तो मसलन ये है कि इस तरह की कुछ प्रॉब्लम हैं जो हमें हम फेस कर रहे हैं। तो हमारे अगर इन्वेस्टर अगर इस तरफ आए, ओलिव की तरफ आए, हम लोगों से मिले, हम उनको गाइड करें कि हमें किस चीज की जरूरत है मार्केट से, वो चीजें बनाना अगर शुरू कर दें, तो हमें हमारे ये मसाइल खत्म हो गए। तो हमें ये चीजें सस्ती मिलेंगी, मटेरियल सस्ता मिलेगा, तो हम आगे उसके जो प्रोडक्ट के जो रेट है उनको और मिनिमाइज किया जा सकता है।
अल्हम्दुलिल्लाह अभी फार्मर, मैं खुद बीइंग ए फार्मर जो है ना, इसको जो है ना शुरू किया, इसकी वैल्यू एडिशन पे काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे पास 100 टन अगर फ्रूट मिल जाए तो मैं उसको जो है ना प्रोसेस में डाल सकता हूँ, मेरे पास स्टोरेज है। तो ये चीजें कि अभी हमें लंबे अरसे के लिए देखना होगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह नर्सरी से लेके उसकी आगे अगर आ जाएं, उसकी मैनेजमेंट पे आ जाएं, उसके बागात की सूरत में आ जाएं, प्रोपगेशन पे आ जाएं, या उससे आगे फिर जो है ना अगर उसकी वैल्यू एडिशन पे आ जाएं, तो इस पे बहुत सी क्लासेस हो चुकी हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बरानी इंस्टीट्यूट ने, उसके बाद डॉक्टर तारिक साहब हैं अभी, वो इस पे काफी काम कर रहे हैं। मसलन उस वक्त मेरे अछूते थोड़े आगे देखना होता था, मैंने भी कुछ क्वेश्चन इन पे किए, तारिक साहब ने इसको अभी मसलन माने भी हैं, डॉक्टर तारिक साहब, अजमत साहब को पता है, तो अभी वो सारी जो है ना टेबल वैरायटियां मंगवा रहे हैं। आने वाले 5 सालों में इंशाल्लाह हम जो है ना खुद कफील होंगे, हमें बाहर से ऑयल मंगवाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। बल्कि 5 साल के बाद हम देने वाले ममालिक में होंगे इंशाल्लाह। अभी हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है कि मोटे फ्रूट का, जिससे हम जो है ना अचार बना सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं, ठीक है, या उसको वैल्यू ऐड करके फ्रूट की सूरत में मुख्तलिफ टेस्ट में जो है ना पैक करके हम सेल करते हैं। इस तरह हम, जिस तरह मैं अभी मेट्रो को दे रहा हूँ, अब हाइपर स्टार को दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें इम्तियाज है, CST है, मसलन ये 6-7 स्टोर हैं जिनको हम दे रहे हैं। तो मसलन पाकिस्तान में अभी इतना फ्रूट नहीं है, खासतौर पर टेबल वैरायटी नहीं है। तो मसलन डॉक्टर साहब ने इनको तस्लीम भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शुरू कर दिया। अभी वो सारे के सारे 100% जो पौधे हमारे आ रहे हैं, इम्पोर्ट होके आ रहे हैं, वो सारे के सारे जो है ना टेबल वैरायटी के। ऑयल वैरायटी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत है, कोई 40 लाख 45 लाख से ऊपर चले गए, ठीक है। तो आने वाले इंशाल्लाह 5 सालों में जो है ना ये कवर हो जाएगा काम, ठीक है। तो बाकी मार्केट में यही हमारे जो है ना, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो यही है कि पैकिंग मटेरियल के कमर्शियल जो बंदे इस पे काम कर रहे हैं वो ढूंढते हैं, आगे पीछे जो है ना इसको वो सर्च कर रहे हैं, कुछ चीजें मिल जाती हैं और कुछ लोगों को कह के बनवा लेते हैं। जिस तरह भी फूड ग्रेड में प्लास्टिक बॉटल, अगर उसको चाइना से मंगवाएं तो वो हमें जो है ना 150 से ऊपर की पड़ रही है एक बॉटल, ठीक है। तो अगर हम उसको पाकिस्तान में बनाएं, तो अगर उसकी वो सारा कुछ करके उसकी डाई बना के, तो हमें 50 रुपया खर्चा नहीं आता, 50 से 60 रुपया उस पर खर्चा आता है। तो मुख्तसर ये है कि वो भी अभी हमने जो कि तकरीबन 10,000 बॉटल वो भी तैयार की है 500 ml की। तो मसला है कि उस जो बाहर से आ रही है उसमें कॉस्ट भी कम हो रही है। तो हमें सिर्फ ये है कि अभी इन्वेस्टर चाहिए जो इस तरह के काम करें, फैक्ट्रियां लगाएं, या फिर उसमें उससे जो है ना एक तो रोजगार बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये ओलिव जो है ना एक बहुत बड़ी मार्केट है, और बहुत से लोग जो हमारे भाई जो है ना जो फारग बैठे हुए हैं, घरों में बैठे हैं, लेबर की सूरत में भी, या फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं जो जिन्होंने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन की हुई है, तो मसलन ये सारे लोग जो है ना खप सकते हैं अगर खुदारा हम कोशिश करें कि जो हमारे बंजर एरिया, ठीक है, जो हमारे खास तौर पे जो है ना जो डेवलप एरिया नहीं है, ठीक है, मसलन उनकी जमीनें जो हमवार नहीं है, ऊपर नीचे सारी खाई हैं, तो अगर हम उनको भर लें, जैतून से ही भर लें, ठीक है, उसको ड्रिप इरिगेशन के तौर पे पानी उनको दें, तो हम अच्छा खासा कमा सकते हैं। मैं खुद जिस एरिया में बैठा हूँ यहाँ पे कलरकार में, हमारे पास सारा अप डाउन है, 800 कनाल एरिया, कोई हमवार नहीं है मेरे पास, 10 इंची भी 10 फुट भी जगह मेरे पास जो है ना हमवार नहीं है। हम मसलन ऊपर नीचे टीलों पे बैठे हुए, तो मसलन उसको आबाद किए और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की सूरत में हम कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है कि जरा हम जो हमारे फार्मर भाई हैं, मैं उनके लिए भी ये पैगाम छोड़ता हूँ कि जिनकी जमीनें बेकार पड़ी हैं, जहाँ से अगर वो साल का 10,000 रुपया अभी जी कमा नहीं सकते घास बेच के भी, ठीक है, दरख्त बेच के भी, तो वहां से वो लाखों के हिसाब से 1.5 से 2 लाख रुपया आराम से फी एकड़ वो कमा सकते हैं। तो यही मेरा एक मैसेज भी है, और खास तौर पे जो इन्वेस्टर हैं वो खास तौर पे अगर आ जाएं ये हमारी ग्लास बॉटल की तरफ, ठीक है, इनके जो ढकने बनते हैं उनकी तरफ कुछ आ जाएं, या फिर जो है ना मिसाल के तौर पे और भी इसमें इंडस्ट्री की सूरत में अगर वो अचार बनाना चाहें, मुरब्बा बनाना चाहें। साहब एक सवाल आया है जी। और साहब पूछना चाह रहे हैं, जनाब पूछना चाह रहे हैं कि ये ऑलिव ट्री को तकरीबन 15 से 20 लीटर पानी दरकार होता है,
तो क्या आप इसकी तस्दीक करेंगे, और क्या आपका जो इलाका है वो बारानी है तो आप उसको खुद भी इरिगेट करते हैं, या वो बारानी तरीके से खुद ब खुद उसकी आपाशी हो जाती है? नहीं, उसमें सर ये है कि जब हम कमर्शियल काम करते हैं, बेशक वो जैतून हो या कोई दूसरा फ्रूट प्लांट हो, उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिल सकती कि जब तक आप उसको पानी ना दें, आप उसको इरिगेट ना करें। पानी की सोर्स मस्ट है। बाकी अगर 15 से 20 लीटर उसको पानी चाहिए तो वो 2-4 लीटर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, लेकिन उसको वीकली पानी चाहिए। आजकल सूरत-ए-हाल ये, एक तो ड्राई है मौसम, मसलन बारिशें कोई नहीं है। दूसरी बात यह कि पौधे फ्रूटिंग पे हैं, तो अगर जो बंदा पौधे को पानी नहीं देगा तो क्या होगा, उसका फ्रूट जो है ना वो कामयाब नहीं होगा, वो मुकम्मल नहीं होगा उसका प्रोसीजर, उसमें जुरियां पड़ जाएंगी। और कुछ जो खास तौर पे हमारी जो वैरायटी है गुच्छे की सूरत में, जिसमें 4-4, 6-6 दाने लगे होते हैं, तो वो बाकी गिर जाएगा, एक आध बच जाएगा, बाकी मर जाएगा फ्रूट। ठीक है, तो पानी मस्ट है, पानी देना होता है। मेरे ठीक है। पास जो है ना सारा वो बरानी एरिया है। ठीक है, मैंने छोटे छोटे डैम बनाए हुए हैं पौंड की सूरत में, हम वो पानी लिफ्ट करके पौधों को ड्रिप के जरिए दे रहे हैं। ठीक है, तो मसलन वो भी वीकली में हमें जो बता लिया कि 4 दिन के बाद अगर पानी ना दें तो उसमें मॉइस्चर कम हो जाएगा, हो सकता है पौधा तो ना मरे लेकिन फ्रूट आपका नहीं बचेगा। तो कमर्शियल अगर काम करना है तो पानी मस्ट है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, आपने हमें बहुत अच्छे मुस्तफीद किया अपने बातों से, और अपनी जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा डॉक्टर अजमत साहब, अभी हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, ये इरिगेशन के हवाले से ना, तो आज इस सीजन में ये तो जो इशू आ रहा है ना इस साल के टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो बड़ा मसला ये आ रहा है कि जो कुछ फार्मर्स के साथ जो पानी कम दे रहे हैं उसके जो फ्लावर है ना वो सूख के सारे गिर गए हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया और वो पानी नहीं दे रहे टाइम पर। तो जब सीजन आप जब इसकी फूल हो जाती है तो उसके बाद इसको रेगुलर पानी चाहिए ताकि इसकी जो फ्लावर है वो फ्रूट गिर ना जाए, फ्लावर सूख ना जाए, और जो उसका जो फ्रूट साइज है वो गेन करें। तो काइंडली फार्मर्स को ये मैसेज देंगे हम लोग के जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाते तो आप लोग रेगुलर पानी दिया करें ताकि आपका जो फल है वो श्रेवल भी ना हो और जो अपना मैक्सिमम साइज गेन करे। तो पानी देना इंतहाई जरूरी चीज है जी। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, और भी कुछ सवालात हैं। एक सवाल जो आया है, इनफैक्ट वीरेंद्र कुमार साहब ने सवाल भेजा है, आई थिंक वो इस वक्त शायद वो डिस्कनेक्ट कर गए हैं, बट वो पूछ रहे हैं कि जो ईरान से कुछ ऑलिव के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो क्या ये हकीकत है, और उनको किस तरह उसकी जो है ना, जो ये इरेगुलर इनफ्लो है ईरानियन ऑलिव्स की, इसको कैसे, उसके लिए रोकथाम के लिए कुछ काम हो रहा है कि नहीं? डॉक्टर अकबर साहब, ये आप ही से सवाल है। जी बिल्कुल, ईरान से स्पेशली क्वेटा में चूंकि उनके करीब है, बॉर्डर के करीब है, तो वहाँ से ईरानियन भी आ रहा है और उसके साथ इसके जो बई प्रोडक्ट है पिकल वगैरह ये भी आ रहे हैं। ये बात ठीक है कि उनकी प्राइस एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के जो प्राइस है उनसे कम है। उसकी वजह है कि ईरान में भी हमारे पाकिस्तान की निस्बत प्रोडक्शन ज़्यादा है, इस वजह से उनकी प्राइस कम आ रही है। दूसरी बात ये ना कि अनफॉर्चुनेटली जो ईरान से आ रहा है अभी तक बलूचिस्तान के लोगों ने या उनके साइंटिस्ट कि पहले उनकी एनालिसिस तो करवाए ना, उनकी एनालिसिस करके बाकी ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है भी या नहीं, वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, आया वो एडिबल ऑयल है भी या नहीं, ये एक बड़ा इशू है। चूंकि कास्ट कम होने की वजह से लोग इसको ले रहे हैं और बाकी किसी को पता नहीं कि ये किस क्वालिटी के हैं। जिस तरह पाकिस्तान में हम लोग हर साल सैंपल लेके इसकी पीसीएस या बड़ी से इसकी एनालिसिस करवाते हैं और एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि वाकई हाँ ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है, ये आपके ऑयल की जो पैरामीटर है ये इस में आ रहा है, आप इसको फर्दर एडिबल ऑयल यूज कर सकते हैं या इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी। अभी रिसेंटली मैंने 2 महीने पहले क्वेटा से मंगवाया था ईरानी अचार, वो किसी ने कहा कि आप जरा चेक कर ले। जब मैंने इसको मंगवाया मैंने खोला था यकीन जाने उसके अंदर इतना गंद पड़ा था कि आप सोच नहीं सकते। फिर इसको मैंने क्या किया, मैंने जो हमारे साथ जो फीमेल काम करती है उसको मैंने कहा आप इसको धो के दोबारा इसको खुद सर का सोल्यूशन बना के उसमें डाल दें। क्वालिटी उनकी वो नहीं होती जो हमारे पाकिस्तानी ऑयल की है। इस पर ये एक चीज़ है कि जब पाकिस्तान में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ये हमारी कास्ट कम होगी, तब जाके हम ईरानी जो ऑयल है या इसकी जो बाई प्रोडक्ट्स है उनको हम
रुकवा सकते हैं या इसकी जो इम्पोर्ट है उसको कम कर सकते हैं। तो ये बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा प्लांटेशन बलूचिस्तान में है और सबसे अच्छी रिकवरी बलूचिस्तान ही से आ रही है। लेकिन दो तीन स्टेज पर पहुंचेंगे कि जब स्टेक होल्डर उठेंगे बलूचिस्तान से और वो इसमें आएंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे और इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करके हम ईरानी ऑयल को बेशक रुकवा सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक दो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने जो सवाल पूछना चाह रहे हैं। तो वासिफ खालिद साहब हैं, मैं आपको माइक दे रहा हूँ, काइंडली अपना सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी अस्सलाम वालेकुम। I have a couple of questions. तो एक आध तो slides वासिफ साहब, can you also introduce yourself before asking Yes, the question? I work for Ghulam Farooq Group, and one of the group companies also has a large area of plantation, and we do a lot of plantation in the area of sugarcane and cotton, and we have a lot of land which is not usable for these products, like which is barren, and जिस तरह उन्होंने कहा है कि फैलो लैंड वगैरह है। तो पहले तो मेरा एक सवाल ये था कि प्रेजेंटेशन के अंदर एक क्वेश्चन था मेरा कि एक जगह लिखा हुआ था पाकिस्तान में ऑलिव ऑयल की जो इंपोर्ट है $11 billion। इज दिस द फिगर करेक्ट? No, it's 11 million, not billion. Okay, so I must have misread it. Okay, the second part is that $9.5 or $10 million, yes, not billion, $10 million. अच्छा, तो दूसरा ये कि बताया था कि सिंध के अंदर गोरख हिल स्टेशन के ऊपर ऑलिव की प्लांटेशन हो रही है। देयर वाज नो एनी अदर रेफरेंस प्रोवाइडेड टू दैट। So my question is that Gorakh Hill is a cooler place as compared to all of the Sindh, where presently इस वक्त मीपो खास, उमरकोट, खैरपुर, रानीपुर, गोटकी, गंबट इस वक्त 45 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो द क्वेश्चन इज के हमारे पास फेलो लैंड भी है, वाटर अवेलेबिलिटी है, हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड है। तो इज इट मतलब लैंड है और बिल्कुल फ्लैट है, तो इज ऑलिव कल्टिवेटेबल in that environment or it does require a lower temperature के जो कि या control environment के होने चाहिए? ये मेरा एक question था for the cultivation side. Number 2 question related cultivation के जो 20 लीटर पानी की बात की गई है, is it because of the drip irrigation और secondly 20 लीटर per week requirement है, per month requirement है, or the whole crop cycle requires 20 लीटर? So this is another question. Number 3 question is that के यहाँ पर किसी ने भी input के बारे में कोई बात नहीं की कि भाई डैप, यूरिया, फॉस्फेट, पोटैश, इसके अलावा क्या चाहिए हमें। नंबर 4, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो क्या इन्होंने कोई फार्मर्स के हिसाब से कोई कॉस्टिंग बनाई हुई है? क्योंकि जितनी भी मेजर क्रॉप्स हैं, जिस तरीके से कॉर्न हो गया और शुगर केन हो गई और कॉटन हो गई, राइस हो गई, इसकी एक बाकायदा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर एक वो कॉस्टिंग की जाती है। तो अगर कोई कॉस्टिंग की गई है तो वो पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर की जाए ताकि वो फिजिबिलिटी कर सकें। चौथी जो बात एक है मैंने पूछनी थी रिलेटेड टू प्रोडक्शन ही, इसका जो ROI की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो ये समझ में आया है कि ROI नेगेटिव है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जितनी कॉस्ट आ रही है तो उतनी रिकवरी नहीं हुई। इज इट राइट? इज माई अंडरस्टैंडिंग राइट? इफ द ROI इज नेगेटिव, तो हाउ वी कैन मेक इट पॉजिटिव इफ यू गो इट ऑन अ कमर्शियल बेसिस? सेकेंडली ये कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑलिव की जो है वो यहाँ पर किसी ने पर्टिकुलर बात नहीं की है। फ्रूट बड़े छोटे की तो बहुत बातें की हैं कि 50 kg पर ईयर है, 15 kg पर ईयर है, 40 kg पर ईयर है, 100 kg पर ईयर है। बलूचिस्तान में अच्छी हो रही है, KPK में कम हो रही है, तो ये कोई हम एवरेजेस की, नेशनल एवरेज की कोई बात नहीं कर रहे हैं। सेकेंडली ये कि एक और जो चीज मेरी बात थी कि PSDP ने एक 50,000 एकड़ का प्रोग्राम अनाउंस किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सब्सिडाइज ऑलिव के ऊपर जो है वो प्लांटेशन करेंगे। तो हैज दैट प्रोग्राम एग्जॉस्टेड और इज इट अवेलेबल फॉर द इवन फॉर द प्रोविंस ऑफ सिंध और नॉट? So these are the questions that are related to the cultivation side. As far as वासिफ साहब पहले इनका जवाब ना दे दें, because this is बिल्कुल देने सर, उसके बाद थोड़ा कमर्शियल साइड पे बात करते हैं। हाँ, I think let's break this down because we're also constrained for time. We have to manage the time. So let's Dr. Azmat साहब, आपको थोड़ा सा मुख्तसरन इसका जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने एक वाटर 20 लीटर पर वीक है, ठीक है, ये इसका जवाब तो मैं ही दे देता हूँ। उसके अलावा डॉक्टर अजमत साहब, यू गो अहेड प्लीज।
जी सर, आप जो वाटर की बात करते हैं ना सर, ये हम नॉर्मली करते हैं ड्रिप इरिगेशन से, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन के थ्रू ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पर प्लांट पर ईयर पर डे कितना पानी चाहिए। ये मैं इंशाल्लाह आपको एक फुल प्रेजेंटेशन सऊद साहब को सिर्फ भेज दूंगा, जिसमें जो इसकी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है हर महीने की वो कितनी है, कौन सी फर्टिलाइजर चाहिए उनको, जनवरी में कितना चाहिए, दिसंबर में कितना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो इसकी वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा साल का शेड्यूल, इमेच्योर प्लांट का, मिच्योर का, और जो प्रोडक्टिव प्लांट्स है उनका, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि 3 साल का पौधा है तो उनको जनवरी में कितना पानी चाहिए, नवंबर दिसंबर में कितना चाहिए, जो 4 से 6 साल का पौधा है उसको कितना चाहिए, और जो इससे ऊपर चला जाता है उसको कितना चाहिए। वो मैं एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, उसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उस तरह आपने बात की कि सिंध में, चूंकि सिंध फर्स्ट टाइम हमने इंक्लूड किया है अपने इस फेज 2 में, जो अभी जुलाई 2021 से जो हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो गया था फेज 2 में, इस साल सिंध को हमने 60,000 प्लांट्स दिए है उमरकोट को, जिसमें हमने उनको ये कहा हुआ है, चूंकि हमारे प्रोजेक्ट की ये पॉलिसी है कि गवर्नमेंट को हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं गवर्नमेंट को, और जो फार्मर्स होंगे उसको हम 33% फार्मर शेयर पे पौधे और ड्रिप इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं। इस साल इंशाल्लाह कमिंग ईयर में ये कम हो जाएगा, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि 33% बहुत ज्यादा है प्लांट्स में भी एज वेल एज ड्रिप इरिगेशन में भी, तो नेक्स्ट ईयर हम ये आ जाएंगे 90-10% पे, और जो ड्रिप है वो 80-20 पर हम देंगे। तो 60,000 प्लांट हमने सिंध गवर्नमेंट को मिनी उमरकोट को दे दिए हैं। उसको हमने कह दिया कि आप इसमें एक चीज करें कि आप एडेप्टेबिलिटी ट्रायल्स लगा दें मुख्तलिफ क्लाइमेट में, मतलब 100 पौधों से कम, 100 से ज्यादा ना हो, 80 पौधे हो, 90 पौधे हो, 95 पौधे, मुख्तलिफ वेराइटीज के 5-5 पौधे आप लगा दें। एक तो हमारे साथ ये एक डेटा आ जाएगा कि कौन सी माइक्रो क्लाइमेट सुटेबल है कौन सी वेराइटी के लिए, क्योंकि सिंध चूंकि फर्स्ट टाइम हमने एड किया। हाँ, आपकी बात ठीक है, गोरेकिल बहुत ही सुटेबल है, क्योंकि कूल एरिया है वहाँ पर हमारा एक नेक्स्ट ईयर में टारगेट है, जो वहाँ पर वाइल्ड आलू के पौधे जिसको कहू कहते हैं उसकी ग्राफ्टिंग का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में हम करवा रहे हैं। वहाँ पर गोरेकिल में भी ग्राफ्टिंग करेंगे, इसकी कन्वर्जन करेंगे, जो कहू के पौधे उसको हम कन्वर्ट करेंगे कल्टीवेटेड में। हाँ, एक चीज़ है, अगर आपको कुछ इस तरह है कि कोई फार्मर्स आपको पता हो या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के जहाँ वो इंटरेस्टेड है पौधे लगाने में, तो काइंडली उमरकोट में हमारा PI है वसीम कल्लो साहब, आप उनसे कोऑर्डिनेट करके आप उनसे प्लांट्स वहाँ से ले सकते हैं। दूसरी बात सर आपने की, सॉरी डॉक्टर साहब, मैं जरा एक इसको थोड़ा सा उनके जो सवालात है ना उनको थोड़ा फोकस करना चाह रहा हूँ। आई थिंक उन्होंने एक तो पूछा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सॉरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, तो एट द मोमेंट उनका सवाल था कि वो इज इट नेगेटिव, और महसूस ऐसे ही हो रहा है कि वो शायद इस वक्त नेगेटिव हो, मगर जैसे यूसुफ साहब ने फरमाया कि जिस तरह उन फ्रूट बढ़ेगा तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि उसकी प्राइस भी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी और मार्केट एक तरह से स्टेबलाइज होगी। इस पे आपका क्या वो है जवाब? इसके सऊद साहब के चंद पैरामीटर है जो इसने बात की। इसके एक रीजन ये है कि अगर आप बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान में ये नेगेटिव में नहीं जा रहा, पॉजिटिव में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही कंड्यूसिव फॉर आलू कल्टीवेशन। वहाँ की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा आ रही है, वहाँ पर जो एयर रिकवरी है 20% से ऊपर आ रही है, तो वहाँ तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ये पॉजिटिव में जा रहे हैं। KP का क्लाइमेट अप टू सम एक्सटेंट, फाटा आप रख लें या जो हिल एरियाज है वहाँ पर भी ठीक जा रही है। हाँ, पंजाब में अप टू सम एक्सटेंट, जहाँ पर एक इशू ये है कि जब फ्लावरिंग के टाइम में वहाँ पर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है या बारिशें हो जाती है चकवाल रीजन में, तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाती है, रीड कम आती है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो एयर रिकवरी है वो भी एज कम्पेयर टू बलूचिस्तान या KP के थोड़ा सा वो कम आ रही है, वहाँ पर ये थोड़ा इशू है। लेकिन जिस तरह शाह साहब ने कह दिया कि फ्यूचर में, चूंकि ये जो ऑलिव प्लांटेशन शुरू हुआ था ना सर, मेनली ये 2012 से, वैसे तो हमने काम शुरू किया था 2000-2001 से, जो मैक्सिमम प्लांटेशन हुई वो 2012 से लेके 2021 तक मैक्सिमम प्लांटेशन हुई है। तो इसमें एक इशू ये आ रहा है कि बहुत कम इस तरह है कि जो मैच्योरिटी पर पहुंच गए हैं, आप 55% प्लांट्स इस तरह है कि जो फुल मैच्योर है। एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि जो ऑलिव का प्लांट इसकी एज है मोर देन 1000 ईयर, तो पौधा जाके 6 ईयर पे जाके वो कंप्लीटली मैच्योर होता है। मीन जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो आपकी 6 ईयर के बाद जाके शुरू हो जाता है। तो एक रीजन है कि कुछ पौधे अभी हीट कम दे रहे हैं। दूसरी एक रीजन ये भी है कि इसमें अल्टरनेट बेयरिंग है,
एक साल आपको फल देगा कुछ पौधे, एक साल आपको नहीं देगा, या एक साल आपको अच्छा फल देगा, दूसरे साल आपको कम फल देगा। इस वजह से भी कुछ एरिया में ये लोग कैलकुलेशन करते हैं कि यार ये हमारा जो है वो नेगेटिव में जा रहा है। बिल्कुल नेगेटिव में नहीं जा रहा। हम सिर्फ एक चीज को नहीं देखेंगे, हमने इसकी वैल्यूएशन को भी देखना है। जिस तरह से शाह साहब के पास अब के साथ 15-20 से ज्यादा उनके बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अगर एक चीज में उसको तोड़ा हुआ है तो दूसरे में उसको कवर कर लेता है। लेकिन जैसे ही ये प्लांट कंप्लीटली मैच्योर होंगे, इसकी जो हम एवरेज प्रोडक्शन बताते पर ट्री वो 35 या 40 केजी एवरेज। इवन हमने आप केपी में 80 केजी भी हमने कलेक्ट किया हुआ है, 90 केजी भी कलेक्ट किया, लेकिन एवरेज हम 35 से 40 केजी ले रहे हैं। और अगर इस हिसाब से आप कैलकुलेशन करें तब भी ये नेगेटिव में नहीं जा रहा, पॉजिटिव में जा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आई थिंक थैंक यू सो मच। और आपका एक इसमें सवाल अगर सर 2 मिनट मुझे दे तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ सर। जी जी प्लीज शाह साहब, अभी आप फरमाइए। उसमें सर ये भाई का जो क्वेश्चन है ना सर, उसका मैं ये कहूंगा कि अगर पंजाब में जिस तरह मैं बैठा हुआ हूँ, अगर मैनेजमेंट अगर अच्छी हो ना तो सर ये नहीं है कि लॉस में जाएंगे, आप प्रॉफिट में जाएंगे। मैं एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ सर कि मैं 5000 से ज्यादा लीटर सेल कर चुका हूँ अभी तक भी मेरे ख्याल में मेरे पास कोई 2200 लीटर अभी भी मेरे पास पड़ा है। ये आने वाले जो 2 महीने इंशाल्लाह जो नई क्रॉप्स आएगी उससे पहले पहले ये खत्म हो जाएगा। तो मसलन ये है कि ये नहीं है कि सर आपको लॉस होगा। लॉस इस सूरत में होगा कि अगर आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है। एक छोटी सी मिसाल जिस तरह अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, अजमत साहब, इसमें 6 साल कमर्शियल हम काउंट करते हैं, तीसरे साल फल आना शुरू हो जाता है। लेकिन कमर्शियल उसका जो है ना हम काउंट करते हैं जब 6 साल के पौधे हो जाएं तो 2 किलो हम उसकी एवरेज लगाते हैं फी पौधे की। अगर आपके पास 10,000 पौधे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर लें। फिर अगर 10 साल के पौधे हैं मिसाल के तौर पे, तो हम उसको मल्टीप्लाई बाई जो है ना 15 केजी पर प्लांट उसकी जो है ना एवरेज लगाते हैं फी पौधे। इसी तरह 20 साल के बाद जो है ना वो हो सकता है 50 किलो या 100 किलो भी फ्रूट देना शुरू कर जाए, लेकिन एवरेज हम उसकी 30 किलो लगाते हैं। ठीक है, तो जो फ्रूट अपना प्लांट्स बढ़ता है उस तरह जो है ना फ्रूट बढ़ जाएगा, तो हमारे जो है ना ये जो लॉस है वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी होती रहती है। लेकिन ये वो बंदे कामयाब है सर जो जरा इसकी फिजिबिलिटी लंबे अरसे के लिए बनाई जाती है, तो लंबे अरसे तक थोड़ा वो चलें। जिनको रिटर्न फौरी चाहिए तो वो इस तरफ इस सेक्टर में कामयाब नहीं है सर। फिर मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो गैर आबाद एरिया है जब उनको आप आबाद करेंगे तो जहां से कुछ भी मिलता तो आपको एक जो है ना आमदन का जरिया आपका बन जाएगा, आपको आना शुरू हो जाएगा और हर साल आपका जो है ना वो प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। और 1000 साल इसकी एवरेज लाइफ हम लगाते हैं और 6000 साल के पौधे भी हैं दुनिया में जो अभी भी फ्रूटिंग पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में सबसे लेंथी लॉन्ग लाइफ जो है ना ये पौधा है जैतून है। शाह साहब, आई थिंक बिल्कुल आपका बिल्कुल आई थिंक जो आपने फरमाया और बिल्कुल आपका कमेंट आ गया है। इसमें मैं अर्ज ये करूंगा कि भाई हमारे पास कोई 5 से 7 मिनट रह गए हैं। We only have about 5 to 7 minutes left for this webinar. I want to give one last I want to give some time to someone who has requested to talk, and that is Mr. Marco Marchetti. I hope I've pronounced your name correctly. And he is the coordinator for Italian Olive Culture Project. So I'd like to give you, we have just a couple of minutes left. So if you can just keep your comments brief, please. I'm giving you the mic now. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. So first of all, thank you very much for this great opportunity. I am excuse myself because I have lost all the last conversation in Urdu. This is my fault that I don't know Urdu. So I don't know what has been told by my great... Mr. Marchetti, can you inform us where you're based and where you're speaking from? Yeah. I'm coming. So I am based in Islamabad. I am the coordinator of a new olive culture Italian project. Italy has always been in the front for introduction of olive in Pakistan. We have done some research in the year 86, 96, 2000. In 2012, we have done the big investment
through the Italian debt swap with the government, and the 2,000 hectares were planted through PRC. So this it was the first investment in the country. As a moral obligation, we have felt that it's time to support Pakistan on technical assistance on olive sector, because olive, as we have seen today, is a hot issue in the country. He has held a big development, but it's not very clear where we want to go, where Pakistan want to go, what want to do with olive. Today, you have a clear views from the different speakers. I would say only 2-3 points, then I would offer the opportunity to be linked with all of you through our project. We will start in a month communication to Twitter or whatever it is. Then I would like to anticipate, as it was suggested by some speakers, that we will propose to the government to create a first working group dealing with olive strategies in the country, having all stakeholders in this group. So we would like to arrive in 1 year to have a strategy in the country about olive sector. So this is one of our targets. Second point, I fully disagree with the option that you should export. This, I think, is not a good option. First, you should try to use the olive in the country. Pakistan needs a lot of olive oil. We have to improve the nutrition, the diet. We have to do a lot in the country. So you cannot export. Olives coming in the country at 1,000 rupees per kilo from Spain. So how you can compete? So let's utilize other approach. Let's improve the diet. Let's go to the school. Let's go to the people. Let's improve the diet that is poor. Olive is the best. And with olive in marginal area, you are developing marginal land. We have seen through the NRSP group, through PPF, we are cultivating in marginal areas. So give the possibility to cultivate, produce and consume in the country. This is my wishes. So, but let's go on. How we can develop this strategy? Mr. Marchetti, yeah. I do apologize for jumping in, but we have about 1 more minute that I can give you, right? Because after that we have to close the webinar. Okay. Then we can. Yeah. So what I offer all of you is to be part and to share. I will share the contact. Be part of our project that we are just starting now, and let's work together for the development of this sector. This is the second point is that Pakistan is a continent. When you speak about something is a continent. In Balochistan, we have 5 agroecological zones. So it's a continent. So it's a problem from the point of view of production, quality and everything. So it's a big resource, but it's also challenge. It's not easy to do olive. Olive is not easy to do. It's a good, smart plant, but it requires its own needs. So I would thank you, all of you. I have appreciated the study, and I would like to discuss further with all of you. Thank you very much. Thank you for your time and thank you for your comments. With that, I'd like to invite Mr. Ehsan Malik. Sir, would you want to give the closing remarks so we can close the session then? Thank you. Yes, I mean, absolutely. I've really learned quite a lot more than I knew about the olive, fruit and what comes out of the olive fruit. So I really want to thank all the participants and the panelists, and particularly Marchetti. I think people like you can help us develop this industry going forward.
I mean, no doubt olives are an ancient fruit, but for us in Pakistan, it's a nascent industry and we're learning and we need all the help. What is a bit surprising, and that's not actually just applicable to olives, but unfortunately it is applicable to a lot of things we do in Pakistan. We adopt a supply-led approach. To take energy, for example, we led a supply-led approach. We established a capacity. We don't actually have demand yet to be able to absorb it, and therefore the cost of energy is much higher than the region. I have a feeling that unfortunately somewhat the same has been adopted in the case of olives. No doubt there is a potential to use marginal land to create employment, to create sources of income. So those are all tick marks, and those are very valid reasons to get involved. But concurrently, I think we should have also spent a lot more time in researching the demand and creating the demand, as Mr. Marchetti was trying to say. Olive obviously is a very healthy fruit, and olive oil is one of the healthiest oils. Unfortunately, not entirely suitable for our cuisine. But is that something that we just accept, or are there solutions for that? For example, could we deodorize it? Could we do something else to it? I think those are things that we should have done, and we can still do. Having said that, this is a learning process, as I said earlier. I think we've got to do significantly more research into this and then take it forward. So on that note, I want to really thank all the participants. I think this is one of the better attended, particularly for what is really a niche, if you like, product. I mean, it's not like the dairy industry or the meat industry, where of course people understand a lot, even the horticulture. But for olives, I think we've had a very good attendance, and we've had very high quality participants of the panel also. So thank you very much, and thank you, Saud and Harim, for organizing it, and thank you also for producing a very useful. Thank you, everyone, for participating and joining. Have a good day. Goodbye. Thank you, sir. Thank you for the session.